Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to another video. So today is another haul video. I know थोड़ा सा monotony सी हो रही है. I am not liking this situation कि सारे videos एक जैसे हो रहे हैं. But I'm shopping and I feel like if I'm not showing, what's the point? So this haul consists of Zara, H&M and Urbanic and CK and Mango. So it's a collective haul basically. So without wasting any more time, let's get started. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I will start with H&M because सबसे ज़्यादा पास में मेरे वही है. So मुझे शायद comment आया था कि make a winter haul. I don't shop specially for winters. I hate winters personally. I do actually have one sweater. No, now I have two sweaters for winters जो मैं बाहर पहन सकती हूँ. उसके अलावा मेरे पास नहीं. I hate shopping for winters. I feel like they are waste of money. So anyway मैं ये खरीदती भी नहीं but my friend said ले लो तो मैंने ले लिया और ये सेल में भी था. I do not like the fact that कि ऐसे है but मैंने सोच लिया कि I will make it like this. मैं इसको आयरन कर दूँगी तो ये ऐसा हो जाएगा I feel, but this button looks very ugly. Anyway मैं बहुत point के इधर उधर हो रही हूँ. हाँ, so first thing first is this coat from H&M. There's a belt with it. अच्छा हाँ, ये मैंने store से लिया था, not from the website. Oh, it still has a tag. It was for 3,000 rupees but I got for 1499, 1500. And I feel like it's a good deal but I regret buying it because I hate buying for winters because it takes a lot of space, so my brain works like that. Next up from H&M I got these sandals. These are so pretty. I really like them. They have like these rhinestone on the strap. मैंने इसको पहना नहीं. I actually liked 3 shoes but I ended up getting one because you will get to know in future क्यों मैंने एक ही लिया. हाँ, so these are for 2,299 rupees and I am in the size UK 4. My feet look so sundar in this. Next up I got this hairband. I was in the store and I needed a hairband और मेरे पास उस time कुछ था नहीं, so just because of that I got this. Next up I got these scrunchies. वो जो काउंटर पे जब आप बिलिंग करने जाते हो ना तो वहाँ पे क्यूट चीज़ें रख देते हैं. That's why I thought of making these because I saw a video and it is very easy to make it but I ended up not making it. So I got these. These are very huge, yeah. So it looks very pretty. So and next up I got stockings from H&M. These are the stockings. मेरे पास सारी almost sheer stockings है. I don't have this black stocking. इसका एक tag था, मैंने वो निकाल दिया, वो folded थी. It looks very small but trust me it fits. I think it fits medium also. I'm generally extra small or small. मैं अभी तक इसको पहना नहीं, पता नहीं क्यों. I think I'm done with H&M. Yes, I think. And next I'm moving on to Zara. I have only 3 things. First thing first, I'm wearing one of the item. This is a bodysuit sweater. मैंने अभी इसको tuck in नहीं किया है. That's why I can see some, क्या कहते हैं इनको, जो भी कहते हैं. Definitely love the color and it is so warm. I feel the neck is a bit too deep for me. थोड़ा सा अगर और छोटा होता तो I would be very comfortable in it क्योंकि constantly मैं check करती रहती हूँ. I'm not that, you know. Fit is perfect. I think it is in the size extra small or small, something like that. I hated leather pants for the longest time but मैंने किसी की वीडियो में देखा और same leather pants, so I searched for it and I got it on sale. How cool is that? So these are not pants, these are jogger I think. और ये है size extra small में. So these are the pants. I got it on sale. How cool is that, Zara? And this is so good quality. I got it for like I think around 1,500 or something and it was priced around 4,000 or something. Leather pants are expensive but yeah, I wish थोड़ा और tight होती तो बहुत अच्छा होता. And it has pockets also. It's very comfortable, yaar. Last item from Zara is
these scarf, एक ये है एंड दूसरा ये है, मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है. These are pack of 2 for 990 and I got it I think 50% off पे सेल में मिली थी. प्रिंट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा. I was thinking to return them, then I thought whatever, just keep it. Oh, इसमें बना हुआ, you can wear it as a head scarf, as a wristband for some reasons, and a neck scarf. So I'm done with Zara. Next up, I have only one thing from Mango, so I'm gonna show it like this only. So I have this bag from Mango, nude bag. मेरे पास एक भी नहीं है, but I thought why not. I have so many black bags, I do not need any more black bag or a bag in fact. But yeah, I got it. It's such good quality, I really like it. ये मतलब full price पे मिला है. This is for 2390 rupees. और मैं इसको ऑनलाइन देख रही थी बट मुझे ये आउट ऑफ स्टॉक मिला है ऑन मिंत्रा. सो मैं लिंक डाल दूंगी, आप चेक करते रहना इफ़ यू वांट टू, बट it is not in stock. So next up I got these sandals. So this is actually my Christmas gift. My sisters gave me this along with bunch of makeup and skincare. So I just wanted to show you this because this is so beautiful. For some reason I call these shoes Cinderella shoes. I don't know why, but kitten heels hai. I'm not the big fan of kitten heels, but they're so beautiful. Moving on to CK, I got some stuff. अच्छा, इसमें 2 बैग्स मैंने सारा सामान एक ही बैग में डाल दिया था बिकॉज एक ही में आ जाता था, पता नहीं क्यों 2 बैग थे. एनीवे, सो number 1 first item I got is these sleeping shorts from CK. Such good quality and I love the color and I love it so much कि मैंने ये sleeping shorts 2 ले लिए, 1 for me, 1 for my sister. I'm having second thoughts कि should I show you or not because this is so intimate and too much information. I feel like I don't think so I should show you, but yeah, these are just normal repurchases and intimate wear, daily wears. I got restock, so yeah, that is that. I won't gonna show you. Okay, moving on to Urbanic. I got 4 things from Urbanic. पहले भी मैंने एक जैकेट ऑर्डर की थी but it was such bad quality, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया. बहुत ख़राब लग रहा था. No, and it was so expensive, wasn't worth it. आपको कुछ Urbanic से लेना है, मेक श्योर कि जब वो सीजन स्टार्ट हो रहा है तो उसको 1 महीने पहले ऑर्डर कर लो बिकॉज इट टेक्स 20 to 25 days टू कम, और जब तक में आता है सीजन चला जाता है. सो डजंट मेक एनी सेंस. बहुत देर में आया ये सब, बट अब क्या कर सकते. और हाँ, मैंने जो लास्ट टाइम रिटर्न किया था उसका आई डोंट थिंक मुझे अभी तक रिफंड आया है कि नहीं. सो आई डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, ऑल्दो आई वांट टू डेस्परेटली वन थिंग. एनीवे, लेट मी शो यू फर्स्ट. ये एक ही चेन है पर इसमें 2 है. इफ यू कैन सी, काफ़ी ट्रेंडी है, सो आई वांटेड टू गेट वन फॉर पिक्चर्स एंड एवरीथिंग क्योंकि काफ़ी वप्पी लहरी वाला लुक है. इसको मैं कहूँगी दिस जैकेट इज सुपर क्यूट. काउ प्रिंट में काफ़ी ट्रेंडी है. क्रॉप्ड जैकेट काउ प्रिंट में है एंड इसका टैग आई थिंक अभी भी लगा है. मैंने इसको अभी पहना नहीं है एक भी बार. देयर इज अ चेन कुछ खास क्वालिटी अच्छी नहीं है. अंदर लाइनिंग है, दैट्स अ ग्रेट पार्ट. इसकी क्वालिटी अच्छी बिल्कुल नहीं, काफ़ी थिन है. मैंने इतना ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो यहाँ ऊपर हाई नेक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, यहाँ तक जाता है. एंड देन बस्ट के नीचे से, बस्ट एरिया के नीचे से देयर इज अ शियर नेट. नीचे थोड़ा कॉर्सेट लुक देने की कोशिश है. आई थॉट ये वायर्ड होगी. आई वॉन्टेड टू रिटर्न दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द क्वालिटी. बट अब इसका रिटर्निंग सिस्टम मुझे बहुत शेडी लग रहा है. आई वोंट रिटर्न इट. नेक्स्ट अप आई गॉट दिस सेट, टाई डाई सेट, the high waist shorts with the Nara. Looks pretty, but I have a issue with the top. ये टॉप ना, अच्छा ये फ्रंट, ये टॉप ना इतना ज़्यादा शॉर्ट है. It will like
literally stop under my bust and I don't like that fact. Last thing, I got this cropped jacket. I literally sweat. इतनी गर्म है ये. I feel like जैसे मैंने कश्मीर शिमला के लिए ले रखी है, पर मैं कभी जीवन में नहीं जाने वाली. एटलीस्ट मैं खुद से कभी भी कोई ठंडी जगह नहीं जाने वाली हूँ. Never. I will like sweat in the heat in a desert rather. Okay, definitely I'm missing out something because I feel like कुछ तो और था. But anyway, I will include some other day. So that's it for today's video. If you like this video, don't forget to give a big fat thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Share my videos with your friends and families, and yeah, that's it, sweetie. I'll see you next time. Till then, take care. Bye.